समाज की जय, भक्त समाज की जय, हैदाखंडी भगवान की जय, भगवान की जय, महेंद्र भगवान की जय, गौतमी गंगे की जय, आज के आनंद मंगल की जय, कालरात्रि मैया की जय, महाकाली मैया की जय, हर हर महादेव। आराध्य श्री गुरुचरण परम बाब जगदम्बा की अनुकंपा से और आप लोगों के सहयोग से ये हैदाखान विष्णु महाधाम में हम लोग चैत्र नवरात्रि संपन्न कर रहे हैं। आज 7वां दिवस है। महाकाली काल रात्रि और महाकाली का पूजन भी हुआ, पाठ भी हुआ, हवन भी हुआ, भंडारे भी हुआ और अब उन्हीं का प्रवचन उन्हीं से समझ को हम लोग इसमें प्रवेश कर रहे हैं और चटर्जी महोदय बड़े दिव्य रूप से हमको उसका भाषांतर कर रहे हैं। आइए उसे हम प्रवेश करें। बोलिए जगदम्बे मैया की जय। With immense benediction and grace of Paramba Jagadamba and blessings and inspiration of our beloved Haidakhan Baba, today we are celebrating the 7th day of this Navratri, Chaitra Navratri, here at Haidakhan Vishwa Mahadham with cooperation and participation of large number of devotees who have come from all parts of India and the world. And today, since morning, we have done our puja to Paramba Jagadamba in the form of Mahakali and Kalaratri. And then we have done her part, the Shaptasati, then we have done the Havan, where we have read the mantras to honor her glory. And then we have had Prasad, and now we are listening to her glory. तो हम लोग श्रवण कर रहे थे परम्बा जगदम्बा के आधे श्लोक से ये यात्रा शुरू हुई जो उन्होंने भगवान विष्णु को दिया और विष्णु भगवान ने इसके 4 श्लोकों में परिवर्तित किया और यही 4 श्लोक देवर्षि नारद को मिले। उन्होंने व्यास जी को इन श्लोकों को सुनाया तो उन्होंने इसका विस्तार जो है 18,000 श्लोकों में 12 अध्याय में 365 अध्याय में और 5 स्कंदों में करके 3 लोगों को सुनाया, अपने शिष्य सूति जी, पुत्र सुखदेव जी और यहाँ राजा जन्मेजय को सुना रहे। कल के प्रसंग में जो है परम्बा जगदम्बा मातेश्वरी राजा राजेश्वरी भगवती त्रिपुर सुंदरी का जो दिव्य मंत्र है ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय, इसकी महिमा का प्रतिपादन किया। और राजा ने कहा भाई किसी से पूरे शुद्ध उच्चारण हो तो बोले भाव शुद्ध चाहिए, भाव विद्यते थे। वैसे तो सब शुद्ध चाहिए पर भाव की ज्यादा नहीं। तो उसमें फिर परम्बा जगदम्बा के जो 3 चरित्र हैं, महाकाली चरित्र, महालक्ष्मी चरित्र और महासरस्वती चरित्र, जिसको तंत्र भाषा में ब्रह्मग्रंथि विमोह, विष्णुग्रंथि विमोह और रुद्रग्रंथि विमोह कहते हैं। तो कल हम जो है इसका पहला जो काली चरित्र है ब्रह्मग्रंथि विमोह, उस पर थोड़ा विश्लेषण कर चुके हैं। अब आज आगे के विश्लेषण को चलते हैं। बोली जगदम्बे मैया की जय। ये प्रश्न जी. So, संक्षेप just to bring you up to date over what we have covered in the last 6 days, we heard how Paramba Jagadamba passed on the entire wisdom of this text in half a shlok to Lord Vishnu. Lord Vishnu then expanded it to 4 shlokas and gave it to Brahmaji. Brahmaji then passed it on to his Manas Putra, Naradji, and Naradji then passed it on to Vedavyas. Vyas, by its very meaning, is Vyapak, means Vishal, expanded. So, Vedavyas had understood that the humans who will come later in the evolutionary process of Kali Yuga, they'll not be able to understand very dense wisdom. So he expanded it to 18,000 shlokas, which were divided into many chapters and so on. And then Vedavyas further gave the
the knowledge of this text to three people: his dear disciple Suji, his own son and great Rishi, Sukhdevji, and last of all, to Raja Janmejay. We had heard about all of that, and then we had heard how, in that context, while Raja Janmejay had asked that who's this Paramba, Jagadamba, and so on, the next context was that once all the gods also decided, means Brahma, Vishnu, Mahesh, decided to find out who this Paramba, Jagadamba was and so on, and when they went to Paramba, Jagadamba, then they got the Paramba Jagadamba's most powerful mantra, Aing, Ring, Kling, Chamundaye, Viche. And then the next question was that we came across was that if somebody is not able to pronounce it accurately, will Paramba Jagadamba be unhappy? And we heard two stories that no, Paramba Jagadamba actually cares for our love and purity of our thoughts and our devotion. She does not care if you are not able to pronounce all these mantras correctly, just like a mother understands when a child is not able to pronounce anything very properly. And then the discussion came of the different charitras of different characters. We have heard about Mahakali, Mahalakshmi, Mahasaraswati over the last 6 days by turn. So the characters of Mahakali, Mahalakshmi and Mahasaraswati. And in that context, we heard yesterday about what we call Vimochan, means opening of the Brahma Granthi. Granthi is a knot, and opening the knot. So what does a knot do? Knot ties you up. And what does Vimochan do? It frees you up. So we had heard yesterday about the Vimochan of Brahma Granthi. And today we will hear about the Vimochan or releasing of Vishnu Granthi, and then afterwards, maybe tomorrow, or Rudra Granthi. तो उन्होंने कहा महाराज ये गांठ क्यों पड़ गई? बोले जीवत्व का काम है, जड़ चेतन ही गंध, जड़ चेतन ही गंधी परी गई, यद्यपि मृगा छूटत कठिन ही, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो जय जय विघ्न हरण हनुमान, बोलो जय जय विघ्न हरण हनुमान, बोले विघ्न हनुमान जी महाराज की जय। जीव का जो है चित जड़ ग्रंथि जीव अंजला दर्शन में आया। जीव किसे कहते हैं? जिसे जड़ चेतन की गांठ को ही जीव कहते हैं। और यह जीव जो है यद्यपि मृखा, यद्यपि गांठ है नहीं, पर उसने मान लिया है, यद्यपि मृखा छूटत कठिन है। ये गांठ है नहीं यद्यपि, पर उसने मान लिया है, छूटना बड़ा कठिन है। तो इसके लिए हम लोग एक उदाहरण देते हैं। एक बार एक ऊंट जो है, जो पहले ऊंट से ही सामान पह जाता था राजस्थान में, तो उसके पास 50 ऊंट थे, उसमें सामान लाके इस नगर से उस नगर में पहुंचाता था और अगर बांध के नकेल लाता था। एक बार क्या हो, एक नकेल नहीं ला पाया वो तो और ऊंट तो उसने बांध दी, पर एक ऊंट को जो है बांधने के लिए सोचने लगा क्या करूं, गांव में जाके मुझे जो है रोटी पानी भी खाना है। तो उसने एक संत जाके ऊपर क्यों परेशान हो रहे, महाराज आज एक नकेल नहीं आई है, तो जो रोज जैसे करते थे नकली ऐसे बांध दो उसको, जैसे गले में या पांव में या जहां भी खाल लगाते थे ऐसा एक्शन कर लो, ऊंट समझ लेगा जो हमें बंधा हुआ, और तुम जाकर के अपने रोटी पानी खा के आ जाओ। तो उन्हें ऐसे ही किया, रोटी खा के आ गए और कोई नकेल खोल दी, चल दिए, लेकिन इसकी नकेल खोली नहीं है। उन्हें सोचा तो नकली बधाया से बधाई नहीं कुछ दिमाग, तो उसको हाँकने लगा, वहीं घूमने लगा। उससे वो समझ आ गए फिर मधुकरी वाले, वाह महाराज
जादू कर गए क्या? क्या हो गया? बोले चल ही नहीं रहा है। अरे तुमने इसको खोला कि नहीं? बोले बांधा ही कहाँ था, नकली बांधा था ना। नकली बांधा तो नकली खोलो। तो उसने फिर वही एक्शन किया खोलने का, तो उठ चल दी। तो यद्यपि मृषा, यद्यपि गांठे नहीं, लेकिन छूटत कठिन नहीं, बड़ा कठिन है। ये 8 पासों से बना है। पाठबद्धो भये जीव, पाठ मुक्त सदा शिव। 8 प्रकार के पासों से है। लज्जा, अपनता, काम, क्रोध, इसमें जीव बधा हुआ है। और जो जीव उससे बधा हुआ है, पाश माने रस्सी, रस्सी से जो बधा है वो जीव है। और पाश मुक्त हो सदा शिव, जो पाश मुक्त है वो सदा शिव है। इस प्रकार से जो है जीव यद्यपि बधा नहीं है, पर उसने मान लिया है। यद्यपि मृखा छूटत, यद्यपि ये सच्ची गांठ नहीं है, पर भी उसे छूटना बड़ा कठिन है। ऐसे ही ये जीव बधा हुआ, ये जीव उदाहरण की बात जी। So now we come to Vishnu Granthi, and as we said, Granthi is a knot, and we all humans are also tied up with many different knots, and most of them are imaginary. And in our Shastras we talk about Ashta Granthi, 8 types of different mental things that kind of tie us down. So one story to explain this, that in the old days all the trade, commerce happened with the help of taking all the things by camel, especially in Rajasthan area, So there were traders who would load a lot of merchandise on camel. So there was this one merchant, and he had loaded merchandise on 50 camels, and then he'll take it from one town to another, to a marketplace where he'll sell them, then he'll buy some more and go to another place. So one day, and of course they traveled the whole day, and then evening they would take a stop somewhere so that they can eat, and the camels can eat, drink, rest for the night, and then again next morning they're on their way. So one evening when they came to a place for halt for the evening, he found that the stirrups, the things by which they tie the camels, they were there only for 49 camels. One of those things were missing. So he was, because he had to go buy his provisions, eat, come back and all. So he thought that if he doesn't tie up that single camel, then it will stray and he may not be able to find it. So he was sort of getting hassled. Just then a saint passed by and he said, "Why are you sort of troubled?" So he said that I don't have the knot to tie up this camel. So the saint said that just do a kind of acting as if you are tying the camel and then, tying it to a pole and so on. So this merchant just acted as if he was tying like he had tied all the others, and then tied it to a pole. And then he went out for the evening, he got his food, provision, everything, came back, slept. Next morning, when he was taking everybody, he untied the 49 camels who were actually tied up, and he was trying to get all of them on the way. But the single camel, who had no kind of rope tying him, though he had none, he would refuse to move. So he's again very hassled because all the other camels are on their way, but this just refused to move. So then the same saint again passed by and he said, "Why are you troubled again?" He said, "I think you have put him under some kind of a magic, spell, because he is refusing to move." He said, "Have you opened his knot?" So the merchant said, "But I have never tied him. He's only been done acting, but he is not moving." He said, "No, you have to act again as if you are opening his knot." So the merchant again acted as if he was opening the knot,
not, then the camel started moving. So this is also our state of being. We are tied in this real world by lots of mental knots. इस प्रकार से हमने मान लिया है कि हम बंधे हुए हैं, वैसे तो मुक्त हैं, नित्य मुक्त शुद्ध हैं, पर मान लिया बंधे हुए हैं, उसका यद्यपि बंधे नहीं है, पर मान लिया है, इसलिए जो है मुक्त होना बड़ा कठिन है। यद्यपि मृखा छूटत कठिन है, इससे छूटना बड़ा कठिन है। तो इसके लिए परम्बा जगदम्बा के जो ये, इधर बोलो नहीं भाई, वर्षा बाबा कौन बोल रहा है, बोलिए नहीं। तो यद्यपि मृखा छूटत कठिन, यद्यपि ये सत्य नहीं कटना है, तो इनके लिए तीन ये ग्रंथि बताई, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि। तो ब्रह्म ग्रंथि की जो है संक्षेप चर्चा हम कर चुके हैं। अब विष्णु ग्रंथि में ये महिषासुर मर्दिनी का चरित्र आता है। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी, जय जय हे महिषासुर मर्दिनी, रम्य कपर्दिनी शैलसुते, रम्य कपर्दिनी शैलसुते, सुरत समाधि 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 मान समाधि सुजाग्रते, चित रजनी 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 कर वक्रविते, जय जय हे महिषासुर मर्दिनी, जय जय हे महिषासुर मर्दिनी, हिरण्य कपर्दिनी शैलसुते, हिरण्य कपर्दिनी शैलसुते। बोले महिषासुर मर्दिनी मैया की जय। तो इसमें व्यास जी ने वर्णन किया कि राजन पहले जो है धनु नाम के हुए, माने धनुज, मनुज से मनुष्य मनुज हुए और धनु से धनु राक्षस हुए। तो धनु के दो बेटे हुए, रंभ और करम। तो उन्होंने कहा पिताजी हम क्या कर रहे हैं, बोले तप करो, तप से शक्ति अर्जित करो, बिन तप तेज के कर विस्तारा, जल बिन होई है संसारा। तो रंभ और करम्भ दोनों तप करने चले गए। तो करम्भ तो जल में चला गया है, यहाँ तक जल में लेकर के ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः। और रंभ जो है चार ओर से अग्नि जला करके बीच में बैठ करके ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर रहे हैं। प्रसन्न किस लिए कर रहे हैं, भोग के लिए। जैसे चील सबसे ऊपर उड़ता है, दृष्टि का है सड़े मांस पर ऐसे ही ये राक्षसों का है। तब तो बड़ा भारी है, पर लक्ष्य का है भोग, मुक्ति नहीं, भक्ति नहीं, भोग। चील जैसे सिर पे ऊपर होता है और दृष्टि उसकी सड़े मांस पर होती है, ऐसे इनका लक्ष्य। तब तो बड़ा भारी करते हैं। चारों ओर से अग्नि जला करके ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे, सूर्य तप रहा है, 5 अग्नि का सेवन कर रहे हैं, ब्रह्मणे नमः, और एक जल में यहाँ तक ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः। अब ये जो है दृश्य जब इंद्र देखते हैं तो उनको अपने गद्दी का डर रहता है। नेताओं को अपनी कुर्सी का और महंतों को अपनी गद्दी का बड़ा डर रहता है। उनको डर रहता है कुर्सी चली जाए, पहले तो वो कुर्सी में बैठते हैं, बाद में नेताओं के ऊपर ही कुर्सी बैठी रहती है। महंत लोग भी जो मठ के महंत हैं, शंकराचार्य आदि, उनको भी भय रहता है, तो उनके ऊपर सदा गद्दी चढ़ी रहती है। तो इंद्र ने सोचा बताओ, जल में रह करके ऐसे भयानक तप कर रहा है, ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः। तो वो चुपचाप जो है मगर बन के, क्रोकोडाइल बन के गया और नीचे उसके पांव को पकड़ा, उसको वही कर्म को भी समाप्त कर दिया। लेकिन उसकी साधना रंभ की चलती थी। जी प्रभु जी। So now we are hearing the charitra of the Vishnu Charitra. So Vishnu Granthi Vimochana, Vishnu Granthi Vimochana, also Mahishasur Mardini. So the story is that there were, in the beginning of time, there were 2 different kind of dynasties. One of Manu, from which the human race came. That's why you have all this Manu Smriti and all that. And then the other one is Danu. So from Danu came all the Danavas, the demons. Okay. So from Danu, there were 2
the difference between the humans or people of higher sort of mental this thing and a Danav? That Danav always do hard penance, tap, etc. for bhog. Whereas in humans, etc., we do it for moksha. So that is the difference between humans and Danavs. So Ram and Karam were both told that you do hard penance. Why? Because you get power, and then with power you can have the rule of Triloki, means all the three dimensions and so on, even including the heaven. So Ram and Karam started doing hard penance. So Karam went under water and he started doing the japa of Brahmane Namaha, Brahmane Namaha, Brahmane Namaha to please Brahmaji. And Ram started doing a very hard sort of exercise, which we have also seen sometimes, that you light a fire in a circle and you sit inside and you kind of do hard meditation, and all that energy of the fire comes into you, and if you can successfully complete that, then you become a very powerful person. And then, of course, so what happened is that their tap became so intense that even Lord Indra, who was the ruler of heaven, he became fearful. So Shastriji said that those who are in power, they are always afraid that somebody else will take their seat of power. Politicians are always afraid. Even the Mahant, the head of a big sort of spiritual organizations, are also afraid that somebody will usurp their seat, who are called Mahants, because they have large estates and all of that. So what Indra did, he actually went underwater as a crocodile, Magar, and he killed Karam. But Ram continues to do his sort of hard penance surrounded by this fire. तो महाराज ये तो समाप्त हो गया है कि नहीं, लेकिन रंभ का कार्यक्रम चलता रहा, ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः। आगे मन में कामना है कि नहीं, तो कामना हो कामना न हो, कामना न हो तो कोई चाह गई चिंता मुझी मनवा बेपरवाह, जिनको कसूर चाहिए वो तो वे अवधूत वृत्ति मस्त बाबा की तरह सुखदेव की तरह मटकते रहते हैं, पर यहाँ तो बड़ी भारी कामना है। तो ब्रह्मणे नमः महाराज शरीर अस्थि पंजर हो गया। तो ब्रह्मा जी ने कहा भाई मेरा नाम जप रहा तो आना पड़ता है, मंत्र में शक्ति है, मंत्र महामणि विषय व्याल के मेटत कठिन कुंक भाल के मनना पाए थी मंत्र। तो फिर ब्रह्मा जी को जो है भाई क्या चाहते हो गया, वो तब हो गया, अग्नि से इधर से बाहर निकलो, क्या चाहते हो? बोला त्रैलोक्य पर शासन तुम तो नहीं कर पाओगे तुम्हारा बेटा जरूर जो है जरूर त्रैलोक्य में शासन करेगा, इसलिए तुम विवाह करो, बेटा पैदा करो। तो इसने जो है महिषी से विवाह किया। तो महिषी से विवाह करने के बाद में इसके घर में जो दो बेटे, महिषासुर और रक्तबीज है कि, तो इसका शरीर पूरा होने का, बेटा मैंने बहुत भारी तपस्या की थी त्रैलोक्य में शासन करूं, पर मेरा तप उतना पूर्ण नहीं हुआ है कि कितनी पीढ़ी, जैसे गंगा जी को लाने में 4 पीढ़ियां लग गई, तो पीढ़ी लगती है। तो बेटा तुम तप करो ब्रह्मा जी के, और ब्रह्मा जी ने कहा तुम नहीं, तुम्हारा बेटा बनेगा त्रैलोक्य का शासक, तो तुम जाओ हिमालय में जाकर के ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः करके महिषासुर को जो है ये उपदेश दिया। तो महिषासुर जो है हिमालय में जाकर एकांत में जाकर के ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः 10,000 साल तक। तो फिर ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी का ठीक है, हमने तुम्हारे पिता को कहा था कि तुम्हारा बेटा क्या चाहते हो? बोले त्रैलोक्य पर शासन चाहता, मैं किसी से मरूं नहीं, लेकिन हम काबू के मरई न मारे, रावण को हम काबू मरई न मारे, वानर मनुज जाति द्विवारे, वानर मनुज जाति द्विवारे, श्री राम जय
सब लोग इस शरीर को अजर अमर बनाना, शरीर पंच तत्व का एक दिन पंच तत्व मिलेगा। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम से, है कि नहीं? ये पंच तत्व का बना है। घोड़ा घड़ा जो है मिट्टी का बना है, बहुत साल तक चलेगा, लेकिन एक नहीं घड़े को कूटना ही। ऐसे पंच तत्व का ये घड़ा तो उन्होंने कहा भाई ये हमारा अजर अमरत्व तो तुम्हें नहीं मिलेगा, हाँ तैलुकी के शासन करेगा तो मान लो किससे तुम्हारी मृत्यु, है कि नहीं? जैसे रावण ने बानर मनुष्य जाति दोनों को छोड़ के कोई हमें न मारे, तो इसने कहा भाई नारी बड़ी कोमलांगिनी है, हमको क्या, नारी को छोड़कर कोई मुझे न मारे भगवान ने वो ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। अब ये अपनी राजधानी में आ गया, सेना इकट्ठी कर दी और सेना इकट्ठी करके भूमंडल में आक्रमण किया, स्वर्ग में आक्रमण किया, तो धीरे धीरे अब त्रैलोकी का सम्राट हो गया महिषासुर। बोले जगदम्बे मैया की जी। So as I said, Karam was killed by Indra in the form of a crocodile underwater, but Ram continued to do his hard penance, surrounded in a circle of fire, and his penance ultimately became so intense that Brahma had to appear. And this is the power of a mantra. When mantra becomes intense, the god, goddess have to appear in person. So Brahma came and Brahma asked that, come out of your hard penance. So she asked, what do you want? So he said, I want to, one, be Amar, and I want the Trilok, means I want to be immortal. So Paramba Jagadamba said that, that is not possible, but I had promised to your father that one day I will give you that. Brahma ji de rahe vardhan. Ji, Brahma ji. So I will give you that blessing. But just say one thing that that will kill. So he said that except for a woman, nobody else can kill me. So Brahmaji said Tathastu. He went away, and then after that, Mahishasur, over a period of time, he went on conquering the three dominions, the earth, the Patal Lok, and the heaven. So he got the Trailokika Sashan, means the entire universe was under his control, and he became the ruler of the Trailoki. तो तीनों पर सेना इकट्ठी की, पहले पाताल में किया और फिर ये भूमंडल में, स्वर्ग में शासन उसका हो गया। तो फिर उसने क्या किया, प्रभुता पाही काहि मदन आई, है कि नहीं? तो बड़ी प्रभुता मिल गई, अधिकार मिल गया, सब कुछ मिल गया, थोड़ा तो उससे सारे ऋषि मुनि देवता लोग मारे फिरने लगे, है कि नहीं? और बहुत समय व्यतीत हो गया, तो सारे ऋषि मुनि देवता लोग यही हिमालय में आए। एकांत में ये कौशानी हमारा रानीखेत के आगे कौशानी गुरुड़ बागेश्वर के पास में है, तो एकांत में आकर के सब देवता ऋषि मुनि औलिया जो है देवी जी का प्रणव जप करने लगे। ओ ह्री, है कि नहीं? आप भी बोलो ह्री। ऐसे प्रणव का जो देवी प्रणव है, बीबीकार संयुक्तम बीत्रहोत्र समन्वितम अर्धेन्दु रसितम देव्या बीजम सर्वार्थ साधकम। तो उसके बाद में उनके शरीर से एक तेज निकला। सारे ऋषि मुनि देवता औलिया फकीर जितने थे इस मंत्र का जप कर रहे थे बड़ी जोर से, तो एकाएक उनके शरीर में से एक तेज निकला, वो आकाश में जाकर के नारी का बोले जगदम्बे मैया की। ऐसे दिव्य नारी का रूप धारण कर लिया और उनके 18 भुजाएं हैं, अक्षक्षक परशम गदेश कुलिशम पद्मम धनुष्कुंडिकाम दंडम शक्तिमसम च चर्म जलजम घंटाम सुराभाजनम शूलम पाशु सतर्छने च दधति महस्ते प्रसन्नानना शिवै शैलमर्दिनी में महालक्ष्मी सरोजस्थिता, कमल में बैठी हुई,
ऐसी परम्बा जगदम्बा मातेश्वरी, उनकी 18 भुजाएं हैं, वह भी खाली, तो देवताओं की भुजाएं तो खाली, तो श्रृंगार करो। कल अष्टमी का दिन है, आप लोग यहाँ श्रृंगार कर सकते हैं, ये उनका स्वरूप है। ऐसे ही दिव्य श्रृंगार जो है भगवान शिव ने अपने स्तूपों ने, एक त्रिशूल निकाला उनके हाथ में दे दिया, भगवान विष्णु ने अपने चक्र उनके हाथ में दे दिया, ब्रह्मा जी ने कमंडल दे दिया, उसने चषक पात्र दे दिया। इस प्रकार से हिमवान वाहनम सिंहम रत्नानि विविधानि चो, हिमालय ने कहा भाई माता कमल में बैठी, इनको युद्ध करना पड़े तो बढ़िया वाहन दे देता हूं, है कि नहीं, उसने सिंह अर्पित कर दिया। ऐसे सारे जो आभूषण हैं मातेश्वरी सज धज गई। अब फिर माँ ने कहा क्या चाहते हो? बोले माँ आपने थोड़ी कृपा कर दी, हम देखो कितने हजारों साल से भटक रहे। ये महिषासुर ने काम का प्रतीक है, काम सबको नचाता है कि नाना रूप धारण करता है। इसलिए यदि आप देखेंगे नाना युद्ध में नाना रूप धारण करता है, कभी भैंसा बन जाता है कि कभी सिंह बन जाता है, कभी असुर बन जाता है। तो हमारे भीतर का जो काम है हमको नचाता है, कहीं जगह जाए नचाता है। अध्यात्म की दृष्टि से ये काम है। और रक्त बीज वासना अगले चैप्टर में आएगा, वासना है सबका आध्यात्मिक अर्थ भी है और लौकिक अर्थ कथा तो नहीं। तो महाराज फिर माँ से प्रार्थना, हे मातेश्वरी, हे राजा राजेश्वरी, हे त्रिपुर सुंदरी, हे अम्बे जगदम्बे, अब आप आ ही गई हैं तो हमारा कल्याण करो, ये महिषासुर से हमको मुक्ति प्रदान करो। तो उनका ठीक है, तब तक भजन करते रहो। अब मैं जो है घंटा नाम आगमना और संत देवानाम, इसलिए हम लोग पहला घंटा बजाते हैं कोई पूजा पाठ में घंटा बजा से, क्यों? देवता आए असुर जाए, तो आगमनार्थ संत देवानाम गमनार्थम च रक्षकाम घंटानादम प्रीयादव पश्चात घंटाम प्रपूजिएत। तो माँ ने घंटा बताया तो वो स्वर उसके कान में गया। बाप रे, देवता ऋषि मुनि सब छिपे पड़े थे, इतनी जोर से घंटा कौन बजा रहा है? उसने अपने दूत को सुग्रीव को भेजा कि जाओ पता लगाओ कहां से आवाज आ रही। तो आया तो देखा भूमंडल में हिमालय की उपत्यका में एक अनंत सुंदरी जो सिंह में विराजमान है, जिसके 18 भुजाएं हैं, वो घंटा बजा रही। वहां जाकर के उसने कहा महाराज वहां एक अनंत सुंदरी है जिसके 18 भुजाएं हैं, बड़ी जोर से घंटा नाद कर रही है। तो फिर उसने फिर अपने एक और दूत को भेज, आप लोग बताएंगे। So this Mahishasur, after he became the king of all the 3 dominions, earth, under earth, Patal Lok, and the heaven, absolute power corrupts, as you know. Power corrupts. When you become too powerful and there is no opposition, you start misusing power. And so Mahishasur also, he took away all the practices of the Brahmins. He stopped their, religious practices and so on. Even the gods, he took away their most favorite things. So they were all very unhappy. So all the gods together, went to a place not very far from here, and they started doing stuti of Paramba Jagadamba. And as they were doing stuti of Paramba Jagadamba, she appeared. And after listening to them, what their problem was, how they were being oppressed and all that, from her body, one beam of light and energy went up into the sky, and in the sky it formed into a most effulgent, beautiful lady who had 18 hands, yeah. And she was most beautiful lady, her face was glowing and so on. But her hands were yet not filled. So all these gods together gave her their best attributes. So Shiv gave her her trishul, the trident. And
Vishnu gave the Sudarshan Chakra. And similarly, Himvan gave the lion, on which she is sitting in all the pictures. And Brahma gave something, somebody gave her what we call Chashak Patra, Madhu, from which she takes honey. Brahma gave Kamandulu and so on. So everybody gave their best attribute to Paramba Jagadamba, and with that she became, now she is in her full alankar, in her full beautiful form, and they tell her, of course, that what their woes are, and now Paramba Jagadamba does what we call Ghantanad. Ghanta, we know Ghant, and Nad means big sound. And when Paramba Jagadamba does a Ghantanad, the whole earth, the whole universe kind of shakes with the vibration. So this Mahishasur is sitting somewhere far, and he hears that Ghantanad, and he says, who has dared to make this sound? Like a rebellion. So he sends one of his juniors to go and find out. So he goes and he finds that Paramba Jagadamba is sitting on a Himalayan sort of top, on a rock, and she's with 18 hands, she's beautifully dressed with arms in each of her hands and other attributes and all. He comes back and reports to Mahishasur that there is a lady like that, and she is the one who's making this daring Ghantana. तो उसने फिर एक दूसरे मैसेंजर को भेजा, उनका उनसे कहो कि हमारे जो राजा महिषासुर त्रैलोक विजयी हैं और उनके पास में एक से एक रत्न है, तुम स्त्रियों में स्त्री रत्न हो, इसलिए उनके पास आ जाओ। तो उसने वहां संदेश दिया, भाई आप अनन्य सुंदरी हो और क्या नाम कहते थे, आभूषण से सुसज्जित हो, हमारे राजा जो हैं त्रैलोकी के शासक हैं, उनके पास एक से एक दिव्य भव्य नव्य रत्न है, आप नारी रत्न उनके पास आ जाओ। तो उन्होंने कहा, मैं जो है ऐसे नहीं आती हूं, अगर उनमें ताकत है तो मेरे से युद्ध करें। नारी, उसने सोचा नारी तो कोमलांगी युद्ध क्या करेगी, तो रणचंडी है, कोमल से कोमल है, कठोर से कठोर है, मृदूनि कुसुमादपि वज्रादपि कठोराणी मृदूनि कुसुमादपि, ये परम्बा जगदम्बा मातेश्वरी राजा राजेश्वरी का चरित्र। तो उसने कहा, कह दो अपने राजा से, है कि नहीं, हमसे युद्ध करें और तब हमसे जीत ली जाए। तो इस प्रकार से उसने संदेश दिया। तो उन्होंने 8 बड़ी लंबी है कथा, 8 बड़े बड़े सेनापति जो है भेजे हुए, चिक्षुरादि, जो जाता है फिर वापस नहीं आता है। तो बड़ी बड़ी सेना लेकर के चिक्षुर गया, दूसरा गया, तीसरा गया, मतलब बड़ा लंबा युद्ध का वर्णन है। तो वहां जाके 8 बड़े बड़े सेनापति सेनाओं के वहां के संग परम्बा जगन्नाथ ने समाप्त कर दे। अब अंत में ये महिषासुर स्वयं युद्ध के लिए जाता है। So when this first messenger who had gone and seen this Paramba Jagadamba in her magnificent form sitting there and daring with her ghanta, he comes and reports. So now Mahishasur sends another of his messenger, Dut, and with instructions that tell that lady that Mahishasur is the emperor of all the 3 dominions, and he has the best of jewelry in the world, he has best of everything. So she is the most beautiful lady, why doesn't she come and join as his queen? Then she will also enjoy all that Mahishasur possesses. So the Paramba Jagadamba says that, look, I'm agreeable to that, but he has to fight with me. And if he defeats me, then I'm agreeable. So he goes back again and reports, and now then Mahishasur sends 8 of his great generals. The first
one was Chikshur, Chikshuradi. yeah, followed by many. And with some, Paramba Jagadamba could just finish them by a mere hum, and one was gone like that. So Paramba Jagadamba is immensely powerful. So one by one, 8 generals with their big armies, some of them went with big armies, with camels and elephants and all of that. But all of them were eventually finished by Paramba Jagadamba. In the end, Mahishasur goes himself to confront her in a battle. तो युद्ध करने के लिए महिषासुर पहले भैंसे के रूप में गया, है कि नहीं? ये हमारा जो काम है ना, नाना स्वरूप बदलता रहता है। तो माँ जैसे मारने लगी तो हाथी बन गया, फिर उसको मारने लगी सिंह बन गया, फिर जो है उसको जैसे मारने लगी फिर जो है महिष बन गया। वही असली स्वरूप राक्षस का स्वरूप बदल रहा है। और माँ जो है, अब इसमें देवता को बड़ी चिंता होगी, तो स्वरूप बदलता जा रहा है। ये काम, ये इच्छाएं, वासनाएं स्वरूप बदलती रहती है। हम सोच रहे हैं भाई हम भक्त हैं, ज्ञानी हैं, पर भीतर भीतर तूफान मचता रहता है। तो इसी प्रकार से स्वरूप बदलता रहता है। उस समय भी देवताओं ने माँ से कहा, माँ हमें बड़ी फिक्र हो रही है, चिंता हो रही है, आप उस समय से नाना रूप बदल रहा है, आप इसको संहार नहीं कर रही है कि नहीं? तो माँ ने कहा, गर्ज गर्ज खड़म मूढ़ो मधु यावत, जो चषक पात्र है, क्योंकि माँ सत्यमयी है, उनको तो क्रोध आ ही नहीं रहा है, सत्यनिष्ठ है, तो उसके लिए जरा चषक पात्र, इसे तंत्र कारण वाली कहते हैं, तंत्र शासन है। तो गर्ज गर्ज क्षणम मूढ़ो मधु यावत पिबाम्यहं मया त्वयि हतन्तेव गर्जन्त्याशु देवता। माने बारे गर्ज ले, ये कारण वाली पी रहे हूँ, मेरे को जरा गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, है कि नहीं? माँ भी जो है भाई भीतर तो प्रेम है, पर कभी कभी गुस्से में बच्चे को एक चपड़ लगा देती है कि नहीं? तो यही माँ लीला कर रही है। तो उन्होंने क्या शशक पात्रा, थोड़ा उनमें ऊर्जा आई, है कि नहीं? रजोगुण आया, उन्होंने तरल त्रिशूल निकाला और बड़ी जोर से महिषासुर, बोले जगदम्बे मैया की जय, छाती में लगा और महिषासुर जो नाना रूप धारण कर रहा था उसका बंद हो गया। जी। So now Mahishasur comes and confronts Paramba Jagadamba in a battle, and they start fighting, and Mahishasur is symbolic of lust, and lust changes its form, from time to time. Sometimes outside is something, inside is something, and so also Mahishasur first came in the form of a buffalo. Mahish means a buffalo. So he came as a buffalo, but when his mother severed his head, he would come out and become some other animal, and so on. Sometime this, sometime that. He was changing his form all the time, like our lust does. Lust always changes its form. It remains inside. So Paramba Jagadamba, in a manner of speaking, was not yet really, energized to fight with him. She was like a play acting, But all the other gods who were there watching this epic kind of battle, they were worried that this Mahishasur, who is Mayavi, like magical, he's changing his form all the time. Paramba Jagadamba cuts his head, he comes out again. So they were praying that Paramba Jagadamba will sort of really get engaged. So Paramba Jagadamba said, okay. So she took what we call Madhu. Madhu is symbolic of energy. So because she wanted to be little like angry to be able to really kill him. So from her Chashak Patra, she took some honey, and that gave her that Rajasic energy, and then with one big blow of her sword, say, talwar se, Trishul, of the trident, she hit him on his chest, and then, Mahishasur finally, after all the play, he died. And Paramba Jagadamba then, of course, had solved the problem of all the gods and all the others, and
and they had many stutis in her honor, etc. उन्होंने कहा माता जी आपको इतने तलवार त्रिशूल से लड़ने की क्या जरूरत थी, आप देख के ही भस्म क्यों नहीं कर दिया। दृष्टैव कन्न भवति करोति भस्म सर्वासुरान् प्रणवोसि सस्तां लोकान् प्रयान्तो हि शत्रुभूता इत्थं मति भविष्यति तेऽपि साध्वी। आपने देख के इसको भस्म क्यों नहीं कर दिया माँ, पर आपने सोचा कि मेरे अस्त्र शास्त्र स्पर्श से ये मुक्त हो जाएगा। आगे दृष्टैव कन्न भवति करोति भस्म, आगे तो इस प्रकार से आप करुणामयी है। यासी स्वयं सकृत नाम भवनीश्वर लक्ष्मी पापात्म नाम हृदयाम हृदयेश बुद्धि श्रद्धा शताम गुरुजन प्रभुश्च लज्जा ताम ताम नतासम परिपालय देवी विश्व। हे मातेश्वरी, हे राजा राजेश्वरी, हे त्रिपुर सुंदरी, आप देख के ही इनको, क्योंकि या श्री स्वयं सुकृति ना, आप जो सुकृति लोग हैं उनके वहां श्री के वहां निवास करते हैं और पापियों के वहां अपने के रूप में। श्रद्धा शताम, जो श्रद्धावान लोग हैं उनके वहां सत्व गुण के वह निवास करते। कुलजन प्रभुश्च लज्जा, जो कुलांगना नारी है उनके पास में आप लज्जा के रूप में रहती है। आपके नाना रूप हैं। ताम ताम नतासम परिपालय देवी विश्वम। हे मातेश्वरी, हे राजा राजेश्वरी, त्रिपुर सुंदरी, हम आपको प्रणाम करते हैं, आप तीनों पुरों की रक्षा करें। इस बात बड़ी लंबी स्तुति की और एक बड़ी दिव्य झांकी यहाँ दिखाई देती है। नीचे महिषासुर है, फिर सिंह है और सिंह के ऊपर माँ विराजमान है। अभी झांकी जहां झांकी बनी रहती है कलकत्ता आदि में, जहां भी देशों में यही स्थिति है। नीचे महिषासुर है, बीच में सिंह है, तो ऊपर महिष मर्दिनी विराजमान है। इसका अर्थ है महिष जो है वो तमोगुण है और सिंह क्या है, रजोगुण है, और माँ क्या है, सप्तगुण है, गुणातीत है। तो अपने जीवन में जो तमोगुण है उसको रजोगुण से दबाओ, और रजोगुण के ऊपर परम जगदम्बा मातेश्वरी को विराजमान करो, जीवन आनंदित हो जाएगा। ऊपर जो है सत्वगुण है, फिर रजोगुण है, तमोगुण, मतलब तमोगुण को रजोगुण ने दबा रखा है और रजोगुण के ऊपर परम जगदम्बा। और कहीं उल्टा हो गया सत्वगुण नीचे आ गया, फिर रजोगुण तमोगुण की गड़बड़ हो जाएगा, है कि नहीं। इस प्रकार परम जगदम्बा मातेश्वरी का स्तवन किया है और फिर उन्होंने विनती की है, माँ अब आपने ये दिव्य कार्य कर दिया है, जब हम पर बाधा आएगी, है कि नहीं। इस प्रकार के असुरों जनित हम आप सभी से विनती करते हैं, अब हम आपका स्तवन करेंगे, आप आकर के इन असुरों का संहार करेंगे और हमारा कल्याण करेंगे। ये वरदान भी मांगा जी। So after Paramba Jagadamba has annihilated, killed Mahishasur, all the gods and goddesses, they do long stuti, means in praise of Paramba Jagadamba, stuti of Paramba Jagadamba. They even say in their stuti that, hey Ma, you could have killed this Mahishasur by mere kataksh, means if you look at somebody with anger, you could have made him, into ashes. But you are fighting with him with swords and all that to liberate him by the touch of your sword or, yantra that you are using. You are most forgiving and most kind. So after this long stuti, they say that, we have one prayer that whenever in future we have a problem where these asurs or somebody troubles us or we are in trouble, please come and save us like you have saved us this time. And with that, Paramba Jagadamba says Tathastu, and then she goes to her. तो इस प्रकार से महिषासुर तो काम का प्रतीक है। कहीं जग कोई आसानी जिसको काम नहीं रहता था उसका समापन हो गया और देवताओं को राज्य मिल गया, त्रैलोकी में सुख शांति की सरिता बहने लगी, देवताओं को अपना स्थान मिल गया, ऋषि मुनि अपने आश्रम में भजन पूजन करने लगे। नहीं तो उसने घोषणा कर दी थी, न हो तव्यम न दातव्यम न जुदाव्यम, न कोई पूजा करेगा, न कोई हवन करेगा, न कोई दान करेगा, कोई भगवान नहीं, मैं ही भगवान। तो अब इससे उन्होंने निजात पा ली, तो बड़ा आनंद छा गया। बोली जगदम्बे मैया की। So I had not spoken about one very important
symbolic thing here, which is that in the pictures that we see of Paramba Jagadamba sitting on the lion, so in that picture, if you notice carefully, this Mahishasura, with his head half sliced off, he is at the bottom, and then the lion is on top of him, and then on top of the lion is Paramba Jagadamba. So, in symbolic terms, Mahishasura is symbolic of Tamogun, and the lion is symbolic of Rajogun, and Paramba Jagadamba is of course symbolic of the Satogun. So, ideal way of living is that in our life also, like Mahishasura, his desires, his lust, etc., we must overcome it with practice of, our various practices with Rajogun and then Satogun. If the reverse happens, that means if Satogun is at the bottom and then Rajogun and then on top is Tamogun, then life becomes a chaos. That also happens in many people's life. They lose all righteousness and all that, and they lead a very chaotic life. But in Paramba Jagadamba's world, whom we follow that ideal of pushing our Tamogun to the bottom. On top of that, we have Rajogun, and on top we have the Satogun. तो इस प्रकार से परम्बा जगदम्बा का जो ग्रंथि विमुख है कि नहीं, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि, जिसको हम महाकाली चरित्र, महा सरस्वती लक्ष्मी या महिषासुर मर्दिनी का चरित्र और फिर महासरस्वती का चरित्र करके अपने जीवन में उतारते हैं, तो ये पूर्ण हुआ। अब अगला जो चरित्र है वो महासरस्वती का है, जिसे रुद्र ग्रंथि विमुख कहते हैं। तो पुरा संवन्य सौंभाभ्याम असुराभ्याम सचीपते त्रैलोक्य भागा चौथा मत बलाशया। अरे ऋषियों, पहले शुंभ और निशुंभ, ये भी मैं और मेरा के प्रतीक है। मैं अरु मोर तोरते माया, मैं अरु मोर तोरते माया, ये बस की है जीवन काया, ये बस की है जीवन काया। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो जय जय हरण हनुमान, जय जय पुरा संवन्य संभाभ्याम असिराभ्याम सचीभते त्रैलोक्य भागा चौथा मत बलाश। बिल्कुल सेम महिषासुर की तरह ये संवन्य शुंभ है, जो मैं और मेरे के प्रति। हम लोग मैं और मेरे में बंद हैं, मैं और मोर तोड़, यही तो माया है कि नहीं? तो उसके प्रतीक है। दोनों कथा भी चलेगी और उसका जो है निचोड़ भी चलेगा। तो पूरा संवन्य शुंभ, पहले वे संवन्य शुंभ ने वही त्रैलोक्य में शासन कर दिया, और उसने भी बड़ी भारी तपस्या वहीं की थी। तपस्या करके ब्रह्मणे नमः, दो भाई थे, ब्रह्मा जी को आना पड़ा, है कि नहीं? वो क्या चाहते हो? बोले त्रैलोक, बोलो तो मिल जाएगा। पहले कहा कि अजर अमर वही शरीर, बोलो ये शरीर पंच तत्व का है, पंच तो मिलेगा, अजर अमर नहीं हो सकता, आत्मा अजर अमर है। यत प्रीताश्च तृप्ताश्च श्वेषु देहेषु जन्तव प्रेमास्पदम सुसंलक्षम आत्मा कैर्नेव मन्यते आत्मा नमस्त भवति। इस आत्म तत्व के कारण अपने शरीर को प्यार करते हैं। अंधे हैं, लूले हैं, लगड़े हैं, सुंदर हैं, असुंदर हैं, कोड़ी क्यों नहीं, वो अपने को बड़ा प्यार करता है। भले जो है मक्का भिनभिना रही, ये तब प्रीताश तृप्ताश, प्रीति भी करते, तप भी करते। शेषु देहेषु जन्तवः प्रेमास्पदम सुसंलक्षम आत्मा कैर्नेव। हनुमान जी ने ही तो कहा, सब कह देह परम प्रिय स्वामी, सब कह देह परम प्रिय स्वामी, मारहि भोजि कुमार गामी, मारहि भोजि कुमार गामी, जिन मोहि मारा मैं
को छोड़ करके अब किसी इन्होंने वही महिषासुर वाली बात हो रहा है, नारी बड़ी कोमलांगिनी होती है तो इसको छोड़ करके कोई हमको न मारे। तो ब्रह्मा जी ने कहा था बस दे दिया। फिर उन्होंने त्रैलोक्य वैसे शासन कर लिया महाराज। अब देवता फिर भटकने लगे, देवता है, ऋषि मुनि और या फकीर है, सब भटकने लगे। हमारे जीवन में भी जब तमोगुण शासन कर लेता है या रजोगुण शासन कर लेता है, सात्विकता भटकने लगती है। दोनों कथाएं चल तो काफी समय तक भटकने बाद में फिर ऋषि मुनि देवता लोग वहीं हिमालय की उपत्यका में जाकर के मातेश्वरी का स्तवन करने, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु भ्रांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। 24 पद इस प्रकार से स्तवन किया परम्बा जगदम्बा का। तो उसी समय माँ पार्वती स्नान किया, वही कौशानी की घटना है कि बड़ा दिव्य। एक बार हम गए थे, कथा हुई थी, बड़ा ऐसा दिव्य जो वर्णन यहाँ है वहां है आज भी। कौशानी से आप अंदर जब जंगल को जाएंगे, हाँ, तो उसी समय वो स्नान को जा रही थी। उन्होंने कहा ये किसका स्तवन कर रहे हो ऋषि मुनियों? तो उनके माँ से एक शरीर, एक देवी और निकल आई। बोले जगदम्बे मैया की महासरस्वती 8 भुजाएं, घंटा ठूल हला निशंख मुसले चक्रम धन सुतायकम हस्ताब्जय दधतीन घनांत विलसत सीतां सुतुल्य प्रभाव गौरी देह समुद्भवां जगतामाधार भूता महा पूर्वा मत्त सरस्वती मनुभजे शुंभादित्यार्थिनी। बोले महासरस्वती मैया की। तो उन्होंने कहा पार्वती अम्बा ने कि भाई तुम किसका स्तवन कर रहे हो? तो उनके शरीर से एक देवी बाहर निकल, बोले मेरा कर रहे। वही माँ सरस्वती बन गई, उनकी 8 भुजाएं हैं। और माँ पार्वती जो थी काली हो गई थी, उन्होंने अलग संज्ञा, उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की, तब गोरी बनी। काली और गोरी का बड़ा सुंदर, हमारे घर में दोनों खेलती है, काली गोरी, क्या गोपनी जो है। तो उनका शरीर काला हो गया, फिर उन्होंने साधना की, गोरी हो गई। तो इनके शरीर से ये माँ सरस्वती निकली, बोला मेरा स्तवन कर रही। तो इनकी भी 8 भुजाएं। तो फिर देवताओं ने इनका श्रृंगार किया, जैसे कलष्टमी को यहाँ श्रृंगार होता है, वस्त्रादि से जो आपके पास हो, तो उसका श्रृंगार किया। क्या तुम क्या करना चाहो? बोले ये शुंभ ने हमें बड़ा परेशान कर दिया भाग्य। पूरा शुंभ निशुंभाभ्याम असुराभ्याम सचीपते। तो उन्होंने माँ का श्रृंगार हो गया। तो माँ ने फिर घंटा बजाया वहीं से, हिमालय से। ये आवाज जो है शुंभ निशुंभ जन्म उनके कान में गई। तो उन्होंने अपने सुग्रीव दूत या दूसरे दूत को भेजा, भाई पता लगाओ कहां से आवाज आ रही। तो पता लगाया, वहां हिमालय में अनंत सुंदरी है जिसकी 8 भुजाएं हैं, घंटा शूल हला निशंख मुसले चक्रम धन, ऐसा। और वो जो है ये नाद कर रही हैं। उन्होंने वाकर ये संदेश दिया। तो उन्होंने फिर सुग्रीव दूत को भेजा कि जाओ उनसे कहो कि हमारे जो राजा शुंभ निशुंभ हैं बड़े प्रतापी हैं और अति सुंदर हैं, त्रैलोक्य के अधिपति हैं, तुम जो है उनके वहां आ जाओ। ये संदेश दो जी, प्रसन्न हो जाएगी। So now it's another yug, and again, like in the previous one where Mahishasur by his hard penance and tap had pleased Brahmaji and then obtained the Vardhan of being the ruler of all the 3 earth, the Patal Lok and the Swarga Lok. स्वर्ग पाताल पृथ्वी जी. So again, after many thousand years later, there were again 2 demons by the name of Shumbha and Nishubha. And Shumbha and Nishubha are symbolic of me and mine. And so always through these, texts of heavy wisdom, there are 2 levels of understanding. One is the level of just what we are hearing, but the other is actually what is happening within us. So me and mine means, how utterly selfish humans are. It's only about, everything is about me and what is mine. And we don't care about that's what is happening to the earth. We have, the whole world is bringing it to extinction by not caring about
other things around us, but only caring about what is comfortable to us. So that's the symbolic meaning. So Sumbh and Nishum again did hard penance of Brahmaji, Om Brahmane Namah, Om Brahmane Namah, Om Brahmane Namah, for many, many thousands of years. And after that, Brahmaji again came and asked, what do you want? And they again said, because this is what the demons or people who are of lower this thing, they can be like, high up in the sky, but their eye is on the piece of flesh which is on the ground. They dive and pick up the piece of flesh and then go up. So, in a similar way, these demons, or so-called demons which is within us, they do hard penance to get power, but that power is for bhog, to enjoy all the things, but not for mukti. Bhukti but not mukti. So they do that, and Brahmaji appears. That is the rule. If any of us do hard penance, lot of japa continuously for years, we also get the blessings of the divine and can achieve what we want. So in the same way, they did much more harder penance for years and years together to get that absolute power. So Brahmaji appeared and asked, what do you want? And they said two things, that they want to be Ajar Amar, that means immortal, and two, they wanted the rule of all the three dominions. So Brahmaji said that, look, once you are born in this physical body, you cannot be Amar. So ask for something else. So they said, okay, because they thought a woman is physically weak in front of them. They were great yodhas. So they said, we will only die in the hand of a woman and nobody else can kill us. So Brahmaji said, Tathastu. And to also rule of the three dominions of the entire earth, the Patal and the Swargalok, they said, okay, you can rule. So in due course, after they got the blessing, they went on and occupied and became the king of all these three. And, somebody with tamogun, based on tamogun, then starts misusing power. When they have it. So they started doing torture, put all these gods out of their business, they stopped their spiritual practice, etc., etc. So they became very unhappy. And again, all the gods together went to a place which is very close to where we are in this Uttarakhand. It's a place called Kausani. And they went there, and there they were again praying to Paramba Jagadamba to come and help them. And as they were doing that, just then Parvati ji, Devi Parvati, she was passing by to go for her bath, and she asked that, who are you praying for? So they said, for you. And then from her body, again, a new form came out, and again it was in the form of Mahasaraswati, effulgent with 8 hands, and then all the devtas, gave her all their best arms, etc., ammunitions and all that, and they explained that these two, Shumbha and Nishum, have made their life hell. They are not allowing them to practice, and they are doing all kinds of sort of misrule on them and everybody else. So again, Paramba Jagadamba did the Ghantanad. Ghantanad is like an announcement that somebody is challenging the rule of Shumbha and Nishum. So Shumbha and Nishum, because otherwise it was banned. Even Shankhanad was not allowed
under their rule. So Shum sent somebody, one of his dut, to go and check, and that fellow went and he saw Paramba Jagadamba sitting, in the form of Mahasaraswati on a hill there, and he came back and described to Shum and Nishum that Paramba Jagadamba, beautiful, 8-handed. So this time, Shum sends one of his ambassadors, who's Sugriv, who's a sweet-speaking like ambassadors do, diplomatic. And he's under instruction that go and tell this beautiful lady that, Shum and Nishum are the most powerful kings of the entire universe. And she has the opportunity to join his kingdom of the most choicest jewels and be one of their jewels as his wife. And Paramba Jagadamba said, yes, I know they are very strong, but actually I had taken a vow, and the vow was that he will defeat me. In fighting, I will marry that person. So go and tell your king that, and I am willing. तो कल से आगे शुरू करेंगे। वो कहता युवाम जयति संग्राम युमे विद्यापन विप्रोहरि युमे प्रतिपदो लोकेश हुमे भरता। मेरा पति तो वही होगा जो युद्ध में मुझे हरा देगा। तो कल श्रवण करेंगे। आज समझ में बोले जगदम्बे मैया की जय। जय अम्बे जगदम्बे जय माता भवानी जय अम्बे जय
प्रसाद फूल प्रसाद जय प्रभु।